dear students, I hope you all are fine. Please stay safe, stay home. Good morning. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you 8 parts of speech. As I told you earlier, today we are going to learn 8 parts of speech. Today we will learn what is parts of speech. Parts of speech क्या होते हैं? What are the 8 parts of speech? 8 parts of speech क्या है? What is the importance of knowing the parts of speech? क्या importance है parts of speech की? Let's begin. In language, the parts of speech are the categories of words based on their function within a sentence. Understanding parts of speech is essential in determining the correct definition of a word and correct grammar. It is very important to know the parts of the speech to improve your grammar. Next, let's begin. In the English language, there are 8 parts of speech. English language में 8 parts हैं speech के. So, first one is noun, second is pronoun, third is verb, fourth is adjective, fifth is adverb, sixth is preposition, seventh is conjunction, eighth is interjection. Fine. So, let's begin with the noun. First we start with noun. What is noun? First is noun. So, we will learn the definition of the noun with example. Noun is a word used to name a person, place, animal or thing. Noun वो शब्द होता है जो किसी पर्सन का, किसी इंसान का, प्लेस कोई भी जगह का नाम या किसी भी एनिमल जानवर का और कोई भी थिंग कोई भी चीज़ का नाम को हम नाउन कहते हैं. हिंदी में नाउन को हम संज्ञा बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउन के एग्जाम्पल हैं गर्ल. गर्ल इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन. स्कूल, स्कूल इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम है. पपी इज़ द नेम ऑफ अ एनिमल. पेंसिल इज़ द नेम ऑफ अ थिंग. So this is the example of noun. Next is, as you can see in this chart, person is a girl, place is a school, animal is a puppy, thing is a pencil. Here we have examples. We have few examples here. First example is, the girl loves to dance and sing. Girl को, लड़की को डांस और गाना गाना बहुत पसंद है. So here the noun is girl because girl is a name of a person. So person name noun होता है. Second sentence is, our school is big and clean. हमारा स्कूल बहुत बड़ा और साफ सुथरा है. So school here is a noun because school is a name of a place. School एक जगह का नाम है. So school is a noun. Third is, I love playing with a puppy. मुझे पपी के साथ खेलना बहुत पसंद है. So puppy is a noun. Puppy is a name of a animal. Puppy एक animal का नाम है. That's why puppy is a noun. My pencil is long. Here pencil is a name of a thing. Pencil एक चीज़ का नाम है. So pencil is a noun. Next we will learn about pronoun. What is pronoun with example? Here you can see pronoun is a word used to replace a noun. Pronoun वो word होता है जो हम noun की जगह पे लगाते हैं noun को replace करने के लिए, so that we will not do the repetition. बार बार noun बोलने से better है we will use the pronoun words. Let's start. He, she, I, it, they, we. These are the example of pronoun. You can see one example. John is a Filipino.
ही इज़ ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग. जॉन है वो फिलिपिनो है और वो बहुत ब्रेव और स्ट्रॉन्ग है. You can see in this sentence, he is brave and strong. So he is a pronoun. In this sentence, John is a noun and he is a pronoun in this sentence. Next, you can see one more example. You can see the children go to school every day. Children जो हैं वो daily school जाते हैं, every day जाते हैं. They love to study. So in this sentence, they is a pronoun. They love to study और उन्हें पढ़ाई करना बहुत पसंद है. So they is a pronoun in this sentence. Next we are going to learn about verb. What is verb? With example. Verb is a word that tells names and action. Verb वो word होता है जिससे हमें कोई चीज़ का पता लगे कि what the thing is going on, कि क्या चीज़ हो रही है, कोई भी action, कोई भी काम करना, that is called verb. For example, mother cooks a delicious food. So you can see in this sentence, mother cooks a delicious food. So cooks here is a verb because क्योंकि मदर क्या कर रही है, कुक कर रही है, वो खाना बना रही है. सो कुक इज अ वर्ब. नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल इज द चिल्ड्रन प्ले हैप्पीली इन द प्ले ग्राउंड. सो चिल्ड्रन प्ले हैप्पीली इन द प्ले ग्राउंड. यू कैन सी हेयर प्ले इज अ वर्ब बिकॉज चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं ना, खेल रहे हैं. वर्ब मतलब कि कोई भी चीज़ हो रही हो, एक्शन होना इज कॉल्ड वर्ब. सो प्ले इज अ वर्ब इन दिस सेंटेंस. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट adjective. What is adjective with example? Here you can see the definition. Adjective is a word used to modify or describe a noun or a pronoun. Adjective वो word होते हैं जिसका यूज टू मॉडिफाई, जिससे हम कोई भी सेंटेंस को, नाउन को, प्रोनाउन को हम लोग मॉडिफाई, स्लाइट चेंज कर सकते हैं, थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सनफ्लावर्स आर ब्यूटिफुल. यू कैन सी द सनफ्लावर्स आर ब्यूटिफुल. सो एडजेक्टिव here is beautiful. Beautiful means सुंदर. Adjective is a word जिसमें ये पता लगे कि कोई भी चीज़ का मेन रोल पता लगे कि वो क्या है. जैसे sunflowers are beautiful, तो sunflower तो हैं बट वो क्या है, they are beautiful. So beautiful is a adjective. Next example you can see, Mary loves reading. Mary को reading करना बहुत पसंद है. She is a smart kid. So here smart is an adjective because she is smart. Smart is an adjective क्योंकि वो loves reading, उसे reading करना पसंद है और वो smart है. तो smart is an adjective क्योंकि उससे उसकी पता चल रहा है कि what type of girl she is, वो किस type की girl है, right? Next we are going to learn about adverb. What is adverb with example? Here you can see the definition. Adverb is a word that modify or describe a verb. जिसे हम लोग verb को describe करते हैं. जैसे verb पढ़ा था हमने, verb is action word. Adverb मतलब modify करना verb को, right? Adjective को भी or any other adverbs or a word group. This modification can provide information related to time. और ये modification adverb मतलब ये modification से we will get the information about related to time, place, manner, cause, degree or circumstances. You can see here the example is the lady dances gracefully. Lady जो है बहुत gracefully dance करती है. So in this sentence adverb is gracefully क्योंकि lady तो dance कर रही है but वो क्या कर रही है, gracefully dance कर रही है, बिल्कुल पैशन के साथ, right? Next you can see one more example.
अ टर्टल वॉक स्लोली। टर्टल जो है बहुत स्लो चलता है, स्लोली चलता है. सो here slowly is a, here you can see slowly is a adverb. Next we are going to learn about preposition. What is preposition with example? Here you can see the definition. A preposition is a word used before a noun. Preposition वो word होता है जो हम noun से before means पहले use करते हैं. Pronoun or grunt to show location, position, time and direction. For example, the ball is in the box. Ball जो है वो box के अंदर है. So here ball is a noun. So in the box, box is also a noun. In is a preposition. Preposition वो होता है जो noun से पहले लगाते हैं. Next example you can see, boy hides under the table. So in this, under is a preposition. In this sentence, preposition under is a preposition. Under मतलब boy जो है वो table के अंदर बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है. So under is a preposition. Next you can see the flower vase is on the table. Flower vase जो है वो table के ऊपर है. So here in this sentence, on is a preposition. Next we are going to learn conjunction. What is conjunction with example? You can see the definition here. Conjunction join words, phrases or clauses and indicates a relationship between the elements joined. Conjunction वो word होता है जो दो sentence को जोड़ता है with phrase और clauses के साथ. Coordinating conjunction connect grammatically equal elements. For example, conjunction के examples are and, but, nor, or, for, so, yet. Subordinately, conjunction connect clauses that are not equal because, although, while, since, etc. Subordinated conjunctions जो होते हैं वो भी हम लोग यूज करते हैं in with conjunctions, but conjunction जो हैं we will use when we have to join two sentences. We have few example. Lucy is singing while Carl is dancing. So here दो सेंटेंस हो गए. लूसी सिंग कर रही है, गाना गा रही है, कार्ल जो है वो डांस कर रहा है. सो while here is a conjunction. While is a word जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, right? Next example is my family and I will go to beach this summer. मेरी फैमिली और मैं बीच जाएंगे this summer. So here the conjunction is and. Next, one more example we have. We have a long quiz today, but Eric is still sleeping. आज हमारा बहुत लंबा क्विज है, but फिर भी एरिक सो रहा है. So here, but is a conjunction. Next, we are going to learn interjection. You can see the definition here. Interjection is a word used to impress emotions or emphasize such as excitement, surprise, joy, anger, or even pain. It is often followed by an exclamation point. इंजेक्शन वो वर्ड होते हैं जिससे हमारी इमोशंस पता चलते हैं. इमोशन मतलब हमारे भाव पता चलते हैं कि हम एक्साइटेड हैं, सरप्राइज हैं, जॉय है मतलब हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, या एंगर है, गुस्सा है हमारे, और इवन पेन हमारा दर्द भी पता लगता है. और इंटरजेक्शन जो वर्ड्स है हम उसको फॉलोड करते हैं, उसमें हम एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगाते हैं. दिस यू कैन सी इन दिस पिक्चर, राइट? नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल हियर.
You can see the example. Bravo, Jason has won the science quiz. So, bravo here in this sentence, bravo is a interjection, and you can see after bravo we have put a exclamation point, you can see. So, this is a interjection. Next example you can see. Wow, what a beautiful dress Aurora is wearing. So in this sentence, wow is a interjection. Wow is, after wow you can see we have put the exclamation point. So wow is a interjection. You can see what we have learned today. We have learned 8 parts of speeches. What are the 8 parts of speeches? We are going to revise. The 8 parts of speech are noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. I hope you understand. Please do practice at home. Thank you. Have a nice day.